साउंड क्यों नहीं आ रहा है सर बच्चों का? Rat trap. Rat trap, lesson number 4. Over to you. Should I start? Tripti. Trisha, sound going now? Clear? And picture also? Yes, very good. Thank you, Trisha. A bit, let's say, help me whenever any sort of problem is there. Because here in school, net problem is there. And this lesson, the rat trap, is about the trap in which we sometimes get trapped. एक मिनट अजय सर, जैसे इसको पकड़ी तो उधर ले जाएंगे, फैन में ले जाएंगे सर. Come into the lesson, and the lesson is about a very poor man, and he was such a poor that even worse than the beggars, that he has no home, no shelter, no food, no scope. Whole day he was roaming here and there, and whenever it was getting dark in the evening, you can say retiring time, going to bed, what he was doing that wherever he was getting the shelter, under a tree, under the open sky, he was sleeping there itself, in the jungle, on the roadside, and in this way he was, let's say, passing his time, passing his life. And he hadn't any sort of family, either mother, father, brother, sister, or wife, or children, nothing. All alone in this very world. No money, no home, no food. And anyhow, he was just passing his life from here to there, there to here. But he was, let's say, making traps. And traps means rat traps, by which we trap the rats. I hope listening. Ayushi, Nitish, Trisha, Anjali. Good. Then okay. Only Trisha Yes, will sir. reply. Nobody will reply. So, Nitish, okay. Please help. I am, let's say, a bit Mansa. Not very expert in computer and laptop, but still. What happens that come into the story that he was making rat traps and selling it. Nobody was purchasing, only off and on some people were purchasing. And by that money, he was anyhow leading his life. And life means only getting his, let's say, bread to survive, to be alive. And for making the rat traps, he hadn't any sort of, let's say, capital to make the rat traps. And that's why what he was doing, he was doing, going into the industry, outside the industry, and going into the outside the plant, the industry, the factories, and there he was what doing that? He was gathering, collecting the throw about things, the wire, the metal, the nails, by which he was, let's say, making the rat traps. And sometimes he had to also, let's say, I mean, still these materials, the wires, the seed, the nails to make the rat traps. But in this way, he was going on. And life was going on. Life was very much horrible. You can well understand. See the summer is scorching sun.
And under such situation, if there is no, let's say I'm in home and no food, you can well understand the circumstances. When we have everything, we have home, we have AC, we have cooler, we have food, then we are facing the problem. So you can think how much problematic, horrible life his was, because no home, no food, sometimes scorching sun, sometimes chill, cold, sometimes raining. But what is great? God never lets kills us always. He takes exams and going on. Now coming to the lesson that जब आवाज नहीं जाएगी, please tell me. Whenever disconnected, you stay connected. Again, it will get connected because of the low or the poor networking. Once upon a time, there was a man who went around selling a small rat traps of wire. You have seen Chuhedani. Seen? Everyone at least know about the Chuhedani, the rat trap. And there was a man in the first line. Yes, Teresa, good. You are intelligent, but also take active participation if you have, let's say, if you are attending the class and this is your lifeline, directly, Khushbu, good. This is directly related to your, let's say, final examination. So there was a man and he was moving here and there into the town, into the village, into the odd areas with a small rat traps, which was made up of wires. First line clear? Then second, he made them. And who is he? He is the main character, the rat trap. Okay, he hadn't any name. He made them. Them stands for. Does it come to your mind? He made them. वह उसको बनाता था. किसको? He made them. Made means, let's say, I mean making the rat traps. He was making the rat traps at odd moments from the material he got by making in the stores or at the big farms. When he was going into the factories, Anjali, he was going into the, let's say, he was going into the outside the big farms, and there odd moments, meaning, wait, Teresa. Odd moments means when he had no work, nothing to do, not selling anything, not going here and there. This is odd time. The time when he had no work. Okay. So under such time or situations, what he was doing? He was simply going into the, let's say, going outside the factories, the farms, and begging for the wire. कतरन जो होता है ना, स्क्रैप कटिंग छटिंग जो भी, जैसे कि दर्जी के यहाँ देखोगे बाहर फेंकाया रहता है या उन लोग कलेक्ट करके रखा रहता है, तो वहां जाके वो दर्जी के यहाँ नहीं, बिग फॉर्म्स में इंडस्ट्री में जाके मांगता था. मिला तो मिला वायर्स को, कील को, जिससे वो रैक ट्रैप बनाएगा. इफ दे आर इट वाज नॉट अवेलेबल, ही समटाइम्स वाज आल्सो स्टीलिंग. व्हेन नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, he was stealing because he wanted the raw material at any cost so that he can make when he had no work, and only then he can sell roaming here and there. I think that everything is clear, isn't it? बोलो, समझ में आया? Time and again, I am telling one thing, that the main character of the story is a very poor man, just like a beggar, and he was. Time and again, it will cut the network problem. You will stay connected, and I will, let's say, again reconnect. And let's say his business was to sell the rat traps, and because he was very much poor, he had no, let's say, I mean, money to buy the raw materials by which he can make the rat trap. So what he was doing, he was going outside the farm, the factories, and begging there. Or if it was thrown outside the factory, he was picking it, collecting it, and if not, sometimes he was just stealing in the factories or outside, in and around the factories. And after making it, he was, let's say, making a garland of the rat trap and moving here
and there and selling it. He met them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores at the big farm. But even so, means even after that, means he was making and selling. But despite that, the business was not especially profitable. Means not profitable means he was finding it very hard to lead life because he was not getting sufficient money to survive, to accommodate, to fulfill his personal needs, like let's say food and the housing and the clothes. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and pretty thievery. भीख मांगता था. हमारे पास जब कुछ रहेगा नहीं और जिंदा है हम, ऐसा देखने में लगता है कि हम या तुम कैसे कर सकते हो, लेकिन लोग दे आर कंपेल्ड, दे आर अंडर प्रेशर. हम भूख से तड़फड़ा रहे हैं, मर रहे हैं, है ना. तो कहीं ना कहीं आदमी भीख मांग लेता है, भैया खाने को कुछ दे दो, और नहीं तो मौका मिला तो चोरी भी करते हैं. तो चोरी, दैट इज नॉट माई इंटेंशन, बट टू सर्वाइव use, but to survive I have to do it. And he was also doing both begging and pretty thievery to keep body and soul together. बॉडी और सोल टुगेदर, मतलब बॉडी में हमारा जान रहे, सोल रहे. ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू बी अलाइव, टू बी सर्वाइविंग. इवन सो हिज क्लॉथ्स वेयर इन रैक्स. जब खाना का नहीं है, जीवित रहना मुश्किल है, तो कपड़ा कहां से पहनेगा. तो जो भी कपड़ा एक कहीं से मिल गया वो चिथड़ा में बदला हुआ था. टैटर्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स वाज देयर, इट वाज रैक. हिज चिक्स वर sunken, completely sunken. His soul, let's say I am in malnutrition, अभी नहीं है ठीक, which shows that यहाँ वो होता है सर ना, नेटवर्क पकड़ता है ना. तो अगर हम कुछ ना होगा. His cheeks were sunken. The cheeks, your cheeks, mine cheeks, if it is balanced and it is swollen, it means we are getting proper food. And if there is a case of malnutrition, naturally, it will be sunken. And hunger gleamed in his eyes all the time. If you will face, look into his face, look into his eyes, you will find only one, let's say, I am in a spirit coming out of it. And that is what? Hunger. That he is very much hungry because he hasn't eaten anything for a long time. Clear? बोलो बेटा अंजलि एंड त्रिशा एंड ऑल, डोंट बी अ म्यूट एक्सपेक्टेटर. ऐसे ही खोल के बैठ नहीं जाओ, कम से कम यस नो का रिस्पॉन्स करो. बोलो क्लियर. फर्स्ट पैराग्राफ. Yes, sir, clear. Please tell that simple. I am trying to make it a simple. One man, a very poor man, his business was to sell rat traps, but he was so poor that he hadn't, let's say, any sort of what money. And then what he was doing, he was going outside the factories and outside the farms and picking there and begging there and sometimes stealing there and making the rat traps and selling. And even that, he was not able to keep himself alive. It was very difficult for him to survive. And then what he was doing, begging, and sometimes also, let's say, what doing? Sometimes he was, let's say, I mean, stealing. And his condition was very horrible. He was wearing, let's say, tattered clothes, rags, and his, let's say, cheeks were completely, let's say, sunken, means he was lean and thin, and there was hunger gleaming into his eye. If you will look into his eyes, you will find that only one thing is there, and that is the hunger and hunger and hunger. Now move onwards. That no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. इस तरह के प्राणी का, वैगाबॉन्ड का, भिखारी का, जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, लाइफ कितना हॉरिबल होगा. By now you could, let's say, at least imagine, isn't it? सैड है, दुखी जीवन तो है जब मेरा घर नहीं है, खाना नहीं है, परिवार नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, और बोरिंग लाइफ तो होगा ही, मोनोटोनस. तो सुबह से शाम, शाम से सुबह हो रहा है, बट देयर इज नो चेंज और एनीथिंग इन माय लाइफ, isn't it? Who plods along the road, plods, घसीट कर चलता है, anyhow, dragging, not able to, let's say, I mean, let's say, walk because of the little energy he had, left to his own meditation, and time and again he was lost into his thought. हो जाता था, मेडिटेट करता था, चिंतन करता था, मनन करता था. क्या फायदा है चिंतन और मनन से? हम लोग कुछ अगर चिंतन करेंगे ना, मनन करेंगे तो कुछ मिलेगा कि ये करना चाहिए, वो नहीं कर रहा, हमारे बच्चे करेंगे, तुम लोग करोगे, आज मैथ पढ़ना है, कल अकाउंट्स पढ़ना है, परसों फिजिक्स पढ़ना है, तो कुछ होगा. यहाँ तो कुछ होना नहीं है.
But one day this man had fallen into a line of thought. One day, time and again, he was thinking, and one day, let's say, he started thinking on one point, and continuously he went on thinking on that very point. What is the point? Which really seemed to him entertaining. And this idea, which came into his mind, pleased him. It started entertaining him. He had naturally been thinking of his rat trap, but suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and siege, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. वो जान लिया. I will, let's say, I will tell you something in Hindi that one day he start thinking, and because of time and again, and whole time he was dealing his life with a rat trap. So it came to his mind that this entire world is a rat trap. तुमको हिंदी में हम समझाते हैं. कभी कभी अच्छे अच्छे लोग, जैसे कि बड़े बड़े ऑफिसर्स, नेता, लीडर्स, कोई भी आदमी कैसे घूस ले लेता है. कोई भी ऑफिस में जाओ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, जनरली बिहार गवर्नमेंट के ऑफिस में कोई काम करवाना, छोटा मोटा आवासीय बनवाना, जन्म प्रत बनवाना, आधार बनवाना, पैन बनवाना, घूस मांगते हैं. और पढ़े लिखे बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं और वो ट्रैप में फंस जाते हैं, ले लेते हैं, तो वो पाप है. और उस पाप के बदले फिर पाप भोगना पड़ता है. तो ये लगा, ये दुनिया में जितनी चीज है ना, जैसे कि लैंड्स है, सीज है, सिटीज है, तुम्हारा विलेजेज, ये कुछ नहीं है, रैट ट्रैप है. हमारे पास घर नहीं है, दूसरा का घर देख के ना हमको उसमें माया जाग गया, ट्रैप में आ गया. अब इस घर को कैसे हमको हथियाना, हाउ टू ऑक्यूपाई, how to purchase, either by hook or by crook, by good reason or by bad means. I have to, let's say, get it. Was nothing but a big trap. It had never existed for any other person. It stands for all the pleasures, the wealth of the world. Whether wealth is in the form of the wealth, or wealth is in the form of, let's say, property like housing, gold, vehicle, cities. It had never existed for any purpose. इसका पर्पस ही एक है, ट्रैप करने का पर्पस है. ठीक है. पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, बेवजह राजा महाराजा जा एक दूसरे शासक क्या करते थे, दूसरे पर अटैक करके और उसको अपने आप में मिलाते थे, मर्ज करते थे, ऑक्युपाई करते थे. देम टू सेट बेड्स फॉर पीपल. बेड्स तुम लोग जानता होगा. बेड्स बोलते हैं चारा को, हिंदी में एक वर्ड हम बोलते हैं चारा. और चारा का मतलब है, जैसे कि पुराने जमाने में फिशिंग किया जाता था बंसी से. लॉन्ग एक पोल होता था, उसमें एक धागा में ना, उसमें कुछ कुछ डाला जाता था, खाने का सामान, चीज है, पोर्क है, और उसको पानी में डालते थे, और उसी से अट्रैक्शन में मछली आती थी खाने, और उसमें हुक लोहे का लगा रहता था, उसमें फंस जाता था. उसको बोलते हैं चारा. तो ये दुनिया में जितना धन दौलत है, घर मकान, सीज, नदियां, पेड़ पहाड़ जितने हैं, सब क्या है, सब है तुम्हारा चारा. पेट है, PAIT. Are you see understanding, Anjali and all? Only Trisa replying. Yes, sir. Don't think that you are online. School is going to soon, after 1 week, and if, let's say, it will rain by Thursday or Friday, school will reopen. So Deepa, Himansu, Mahak, Palak, and Priya, Pratibha, Priya reply. Only Palak and Anjali and Trisa is replying. ये दुनिया में जितने सामान है, नदियां, पेड़ पौधे, देखते हो कैसे अभी कश्मीर पर पिछले 50 साल से कब्जा चल रहा है. इधर हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान वाले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ओनली आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल that it is of our Indian country, and they tell why. Not that it has, let's say, many much riches, but the beauty, the scenic spot, the heavenly, let's say, I mean, landscape there. तो हम लोग नदियों को, पहाड़ों को, एरिया को, घर को, मकान को, धन को, दौलत को, गाड़ी को, घोड़ा को अपनाने के लिए ये चारा का काम करता है. ये सब सारी चीजें जितना का नाम बताया, और इसको हथियाने के लिए, और ये तो इसको लगा ये रैट ट्रैप में अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं. आगे बताएगा. इट ऑफर्ड रिचेज. ये दुनिया के जितने सामान है, क्या है, जैसे कि आज हमको AC वाला एक मकान मिल जाए, अपार्टमेंट, तो रिचेज है, उसमें जॉय है, उसमें धन है, संपत्ति है, संपदा है. तो उसमें ना क्या है, रिचेज है, और जब वो मिलेगा तो खुशी मिलेगा. अभी AC में रूम में हम या तुम बैठ जाओगे आराम से, बढ़िया कुशन, वेल मेंटेन रूम में, अपार्टमेंट में, तो कितना मस्ती आएगा. शेल्टर वहां मिलता है ना, गर्मी से, जाड़ा से, पानी से. वहां फूड मिलता है, वहां हीट मिलता है, जब सर्दियों में हीट की जरूरत होती है, वहां क्लोथिंग मिलता है. यही तो पैसा और दौलत क्रिएट करता है, खुशियां क्रिएट करता है, हमको खाना देता है, हमको रहने का आश्रय देता है, हमको कपड़ा देता है. एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क. और विदेशों में क्या करते हैं, यहाँ तो रोटी है और रोटी है, कभी कभी चारा, कोई कोई कीड़ा मकोड़ा को उसमें डाल देते हैं. और विदेशों में लोग क्या करते हैं, पोर्क जो होता है, मीट,
तुम समझते हो, सुअर का या चीज है कोई भी टुकड़ा वो चारा में डाल देते हैं, चारा के रूप में डाल देते हैं जिससे मछली पकता है। as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, और जैसे ही उसको छूने का कोई कोशिश करता है, जैसे मछली उसको खाने के लिए, जैसे हम लोग कोई गाड़ी है कोई घर है उसको देख के जहां मन में पाप आया हम लोग फंस जाते हैं। मिल तो जाता है, हथिया लेते हैं, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, इट क्लोज ऑन हिम। कैसे चूहा एक बार चूहेदानी में अंदर जाता है, वंस अ माउस और अ रैट enter into the rat trap, it closes forever. It will open in the entry time, but it has no exit, and then everything came to an end. फिर उसके बाद हम लोग को भी और चूहे के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। एक बार पाप कर लिए और गंदा हो गया, दामन हमारा दागदार हो गया। देखने में लगता है पलक के यहाँ गए, पलक का कोई महंगा सामान ज्वेलरी उठा के अंजलि के यहाँ से ले आए, देखने में लगता है कोई नहीं जाना ये मेरा हो गया, लेकिन उसका 10 गुना देना पड़ता है। कभी बीमारी आ जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी और भी किस तरह का ऑड मोमेंट्स हम लोग को फेस करना पड़ता है। ऑड टाइम्स, रफ टाइम, हार्ड टाइम्स, है ना। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि पुराने जमाने में, जो हम लोग पुराने जमाने में बोल रहे हैं, पूर्व जन्म में जो पाप किए हुए हैं इस जन्म में भोगना पड़ता है, तो भोगना पड़ता है। whether I believe you believe in, let's say I am in previous birth or not, but in this birth this is a lesson for all the children that suffer as much as you can. If God has not given you anything or me anything, but we will not be dishonest, we will not be, let's say I am tempted by the bait, चारा में फंसेंगे नहीं और फंस कर हम लोग उसको लेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं। अब आगे बढ़ो, ठीक है, क्लियर है साहब। पैराग्राफ नंबर 1 और 2 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, एंड सेकेंडली दिस दैट, इसमें बताया कि वो लगातार एक दिन सोच रहा था, सोचते सोचते सोचा कि ये पूरा दुनिया क्या है, ये पूरा दुनिया एक चूहेदानी के समान। यहाँ भी बहुत सारा सामान है, घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, नदी है, पहाड़ है, और इसको हम लोग हथियाना चाहते हैं। अगर अपने विवेक का इस्तेमाल, इफ वी हैव नॉट, लेट्स से आई मीन डन द एप्लीकेशन ऑफ द आवर कॉन्शियसनेस, our, let's say I mean righteousness, then we are get stuck and we get stuck forever. फिर एक झूठ को कैसे बोलते हैं, एक पाप या एक झूठ को छुपाने के लिए सारा पाप करते जाना होता है। अब आगे चलते हैं, ठीक है साहब, बोलो बेटा, एवरीथिंग फाइन, रिप्लाई फास्ट, Yes, sir. रेस्ट ऑफ यू, ओके नीतीश, now move on that. Now write down the question assignment, and principal sir has said to submit into the office, not to the teacher, but into the office by your parents or after the opening of the school. Directly, it has not to be handed over, submitted to the subject teacher, rather to the office. यही तो बोला गया है सर, असाइनमेंट को जमा करना है ऑफिस में। किशोर सर है यहीं पे, चलो राइट डाउन। What are the things which act like baits for the people? पहला क्वेश्चन नंबर 1, What are the things, वह कौन कौन से सामान है जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेट का इस्तेमाल करते हैं। टेक आउट योर कोप, नोटबुक एंड पेन। What are the things which act like baits, B-A-I-T-S, baits for the human beings? What are the things which act like bait और baits, S लगाओ, जैसे क्या लिखा, cities, village, food, clothes, wealth, isn't it? And second one, give a brief introduction of the rat trap peddler. Give a brief introduction of the rat trap peddler, which is given into the first paragraph, that he was a vagabond, his life was worse than a beggar. He hadn't home, he hadn't family, he hadn't any, let's say, scope to survive, to get his, let's say, food or clothes. And he was making, in which way making rat traps. And after making, he was selling, roaming and wandering from this place to that place. 2 assignments for today. Clear? लिखे जी, give a brief introduction of the rat trap peddler. और ऐसे करोगे ना पूरा स्टोरी तुमको याद हो जाएगा। This idea has been given Tripti, Khushi, Himanshu, everyone, whosoever is there. Do well. Yes, yes. Do well into your final examination. और एक बार बोझ नहीं होगा,
थोड़ा थोड़ा सा करके गिव अ बिग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द rat trap peddler जो बेचता था, एंड सेकेंडली व्हाट आर द थिंग्स व्हिच acts like like पेट्स फॉर द ह्यूमन बींग्स। हो गया, अब आगे चलते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये लाइन को थोड़ा दिमाग से काम लो। जब हम गरीब हैं, जब हम कमजोर हैं, और दुनिया में एक से एक ऐशो आराम, लग्जर से, कंफर्ट से, किसी के पास मकान है, किसी के पास बेशुमार दौलत है, BMW गाड़ी है, वैसे लोग कोई हम पे सहानुभूति नहीं रखेंगे। ये दुनिया का रीत है। वैसा होता तो फिर यहाँ गरीबी रहती नहीं, यहाँ कुली मजदूर होते नहीं, रिक्शा पुलर होते नहीं, ऑटो चलाने वाले नहीं होते, सारे अमीर लोग उसको पैसा देते हैं। तो इसको लग रहा है इस दुनिया में इतना दौलत है, इतने दौलतमंद व्यक्ति हैं, सो मेनी रिच पीपल्स आर देयर इन दिस वेरी वर्ल्ड, बट नो वन इज पेइंग अटेंशन और गेटिंग सिंपैथी ऑन मी एंड गिविंग मी सम मी। तो ये लाइन यही बोल रहा है, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। उसके प्रति भी कोई दयालुता नहीं दिखाया, दयालुपन नहीं दिखाया, दयालुतापन। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो सोच सोच के उसको खुशी मिलती थी कि अच्छा बेटा, पाप में फंसोगे, दौलतवान होना और दौलत कमाने के लिए, कैसे बोलते हैं हिंदुस्तान में, 99 के चक्कर में रहते हैं हम लोग हमेशा। 99 हो गया, किसी तरह 100 हो जाए, पाप करके ही हो, घूस करके ही हो, गलत काम करके हो, हेरा फेरी करके हो जाए हो जाए। सारे लोग ऐसा नहीं करते, दौलतमंद व्यक्ति ऐसे ही करते, जैसे बिजनेसमैन ओपनली आई एम टेलिंग, दे आर नॉट मेंटेनिंग देयर प्रॉपर लेजर। ये समझ सकते हैं तुम्हारे कॉमर्स वाले दोनों बच्चे, टैक्स पे करते नहीं, इनकम टैक्स। साल में अगर 1 करोड़ का बिजनेस करेंगे तो 10-20 लाख का दिखाते हैं। तो उन लोग, ये सोचता है रैट ट्रैप पेडलर्स कि तुम लोग फंस रहे हो चूहेदानी में, पाप के चूहेदानी में फंस रहे हो, और सोच सोच के अच्छा लगता है। कुछ को देखा कि चूहेदानी के अगल बगल घूम रहे हैं, जैसे चूहा क्या करता है ना, चूहेदानी दिखेगा ना तो उसको नजर आ जाता है कि उसमें चीज है, बिस्किट है, चॉकलेट है या पोर्क है। तो पहले वो 2-4 चक्कर मारता है बाहर से और देख लेता है कि कहीं से बाहर से तो मिल जाए, नहीं मिलता है फिर वो अंदर जाता है। एक बार अंदर जाता है, हमेशा के लिए अंदर जाता है। उसी तरह ह्यूमन बींग्स करते हैं, हम लोग भी वैसे ही करते हैं। क्या करते हैं, पहले किसी का दौलत देख के, चाहे गवर्नमेंट का दौलत हो या इंडिविजुअल का दौलत हो, उसको देख के पहले मन में चाह आती है और धीरे धीरे उसको हड़पने का कोशिश करते हैं और हड़प लेते हैं। हड़प तो लेते हैं, मिल तो जाता है, लेकिन हम लोग जाल में फंस जाते हैं, पाप की दुनिया में घुस जाते हैं। तो ये बोलता है, became a cherished pastime, it became a cherished pastime of his। ये क्वेश्चन पूछेगा, उसका cherished pastime क्या था? जब खाली समय था तो वो क्या करता था? वो एक काम करता, खाली सोचता था। अच्छे लोग, अमीर लोग, अच्छे लोग का मतलब अमीर लोग जो है, पैसे वाले, जो दौलत वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, रात दिन अपना दौलत बढ़ाने के लिए ट्रैप में फंसने का कोशिश करते हैं। और इसको खूब सोच सोच कर मजा आता है कि चाहे तो तुम फंस गए हो इस रैट ट्रैप में या आगे जाके फंसोगे। ड्यूरिंग मेनी डियरी प्लॉटिंग्स, कब, जब ये घूमते रहता था रैट ट्रैप्स बेचने के लिए, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। ट्रैप का दूसरा वर्ड है क्या, स्नेयर। क्लियर है, SNARE, स्नेयर। दूसरा वर्ड हो गया ट्रैप। तो देखता था कि लोग ट्रैप के बाहर घूम रहे हैं, या कुछ लोग घूमते घूमते उस ट्रैप में फंस गए हैं, और ये देख देख के इसको ना बेशुमार खुशियां प्राप्त होती थी। एंड ऑफ अदर्स, कुछ लोग ऐसे हैं वो वेर स्टिल सर्कलिंग राउंड द बेड, चारों तरफ घूम रहे हैं, यहाँ पर दौलत रखा हुआ है और उसके ओर घूम रहा है। जब कोई नहीं देखा, जब मौका मिला उसको हड़प लिए। तो हड़प तो लिए, पैसा मेरे पास आ गया, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं। क्लियर कट हमको पढ़ाया गया पेरेंट्स के द्वारा, ऐसा पैसा हमेशा ब्लास्ट करता है, बीमारी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, घर बैठ जाता है, हमको नहीं होगा, हमारे बच्चे को होगा, हमारे स्पाउस को होगा, पति है पत्नी को होगा, पत्नी है पति को होगा, और होता है। और नहीं तो पूरा दुनिया यही उल्टा सीधा में फंस जाता है। इसलिए हमेशा सीख दिया जाता है, सही रास्ते पर मिलो, खून पसीना का मिलेगा तो खाएंगे, और नहीं तो भूखे सो जाएंगे। आज नहीं मिला कल मिलेगा, और काम करेंगे, मेहनत करेंगे, नियत अच्छा है तो बरकत अच्छा होगा। हमको लगता है लेसन के साथ ये सब पढ़ना जरूरी है, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है। इसलिए खूब पढ़ो, अच्छा अच्छा जॉब लो, अच्छा अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा अच्छा पैसा मिलेगा, फिर ये सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो आगे। रोज घूमता था, एवरीडे, फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट से नाइट, ही वाज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड द पर्पस वाज व्हाट टू डू, to sell his rat trap, isn't it? So one dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. MC के लिए क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन, आवाज आ रही है ना? यहाँ दिखाता है योर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, होता है कभी कभी वीक पड़ता है। जा रही है आवाज?
कृषा कनेक्टेड है? आयुषी, खुशी, हेलो हेलो, कनेक्टेड है ना जी? है अभी? हेलो, या वो समटाइम्स इट विल बी। Yes, sir. हाँ ठीक है, वो कभी कभी जाएगा, नेट प्रॉब्लम। यू स्टे। तो बच्चे अभी निकल गए, 29 से 27 हो गया, नो प्रॉब्लम। अब एक दिन की बात है, रोज ने घूमता है वो, और घूमने का पर्पस क्या है उसका? बेचना। घूमते 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 शाम हो गया, जहां शाम हो गया गांव में बोलते वहीं बिहान हो गया। गरीब आदमी बिहान मतलब वहीं वो सो जाएगा, रोड के किनारे, जंगल में, झाड़ी में, पेड़ के नीचे। तो इसी तरह एक दिन शाम हुआ, अंधेरा होने लगा। He was, let's say, I mean, badly exhausted, left with no energy, not got any sort of food. In the meantime, what he saw, वो देखा है किनारे में ना एक ग्रे कॉटेज है। तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आएगा, किस तरह का कॉटेज था? ग्रे कॉटेज था। ग्रे लिखा हुआ है, ग्रे तुम भी लिखोगे। ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड के किनारे ही था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। हमेशा कोई भी घर मकान इस तरह का मिलता था ना, वो एक बार जरूर जाता था वहां पूछने के लिए कि रात में हम यहाँ ठहर सकते हैं। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, नेट प्रॉब्लम। घर में रहते तो ये नहीं होता है। ठीक है, नाउ माय साउंड गोइंग? हेलो, Yes, sir. या। सो whenever it was getting evening, and if by chance he could see any sort of house or hut or a cottage, he was definitely going there to ask whether he could pass his night in that very house, cottage or hut or not. And every time he was, let's say, replied in the negative, that nobody will, let's say, I mean allowed. मेरे या तुम्हारे घर में भी कोई इस तरह का गंदा सपना आदमी आ जाएगा ना, तो आदमी डर से नहीं रखता, कौन है क्या है, क्रिमिनल है, लेके भाग जाएगा, जान मार देगा, मर्डर कर देगा। लेकिन ये जाता था हमेशा, और आज भी गया। ठीक है, nor was he refused, but today, let's say, just opposite of it happened. He went there, knocked the door, a man came and he asked, sir, I want to stay here inside with you. And he was not refused, means he was allowed, permitted, that okay, you can stay. Instead of the sour faces, जनरली क्या होता था, लोग मुंह खट्टा कर लेते थे, है कौन है, क्या है, यहाँ क्या है, धर्मशाला है, यहाँ का होटल है, यहाँ कैसे सोओगे, यहाँ कैसे पास करोगे, विच ऑर्डिनरली मेट हिम। अधिकांशतः यही होता था। The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. There was a man, he was an old man, he hadn't also any sort of family. न उसके पत्नी थे, न उसके बच्चे थे, अकेला था। तो he became very much happy। जो ओनर था उस कॉटेज का, वो खुश हुआ कि चलो कोई तो एक आया, उसके साथ हम लोग कुछ शेयर करेंगे, कुछ केयर करेंगे, कुछ उससे बातचीत करेंगे, इसलिए उसने अलाउ किया। उसके न पत्नी थे, न बच्चे थे, न कोई परिवार।